here to talk about choices, because of which we all are here. Not the ones that our parents made the trainee night, no. It's our choices, our career choices that bring us here. So I'm a Bachelor's of Commerce, BCom. I did MassCom. I left it midway because I realized it's different than Master of Commerce. After that, I saw 2 states and I enrolled for an MBA. But after 2 years of MBA, I was so disappointed, not because I did not find Alia Bhatt, but MBA teaches you nothing apart from making simple things complex with business jargons, and you can use PPT to explain it. So business jargons such as, अगर आपने पकौड़े का ठेला खोला है, it's a startup. अगर भाई पकौड़े का ठेला दुकान बन गया और आप टैक्स नहीं भर रहे तो entrepreneur. अगर आपको गणपति का चंदा इकट्ठा करना है तो क्राउड फंडिंग. और अगर आपको चौकीदार बनना है तो आप मार्केटिंग कैंपेन. Last but not the least, if you are a chai wala, you are a marketing guru. Yes, but I was excited to join. After MBA the IT sector because technology excited me. I always wanted to contribute to this world of technology and innovation because before this, technology for me was evolution which started from radio, TV, ATM, and jet spray. वो जो सीधा लगता है वो वाला. Whenever in the essay they asked me about technology is a boon or bane, I always wrote it's a boon because I wrote hefty advantages that it's hygienic. The use of chemical soap is optional afterwards. It was an introduction for us to a hands-free era. And there was only one disadvantage, that the flow of water across the jet sprays in the country was inconsistent. So after doing this MBA, I joined IT sector, and then here we are trained for 2 months in this beautiful campus. And as a middle class Indian, okay, you add all this cost of training, okay, and the cost of accommodation that you get, and some brand value, and you boast it off because you feel good, first of all, and then you can boast it off in the matrimony offers that you get. Yeah, and then in the training you are given 3 columns. Again, the choices, the choice of your technology, okay, the DC that you want to operate from, and the remarks. Okay, but that's not how you read it. It's like maximum on-site, the place which is easiest for you to get laid, and remarks where you can explain the first 2 lines. So after having this training, we are normally assigned a project. Okay, then project can be of 2 types. One is support, one is implementation. एक माँ है, 2 बेटे हैं, एक सगा, एक सौतेला. It's like Rob Stark and Jon Snow for Catelyn Stark. Rob Stark, being obviously implementation, he gets to marry the woman of his choice. Okay, he gets to become the North of the king of the North. And so likewise, implementation person gets on site, that's the cream of the work. On the other hand, Jon Snow, he is signing an oath which prohibits him to attend family, to have marriage, and you have to work in extreme climatic conditions like Castle Black. Similarly, the support person also sign a treaty, okay, where he works only in night shift, which prohibits him from any family. And after several years of experience, when he goes out for an interview, the interviewer says, Jon Snow, you know nothing. सही में मैंने जिस प्रोजेक्ट में काम किया ना, सपोर्ट में कोई काम नहीं था. 3-3, 4-4 दिन गुजर जाते थे, खुद को चुट्टी काट के पड़ती थी कि मैं जिंदा हूँ कि नहीं. सही में अगर कुछ दिन अभी बारिश का माहौल चल रहा है, अगर आप बायोमेट्रिक स्कैन में स्वाइप इन करने जाते हो, ठीक है, गलती से भी फिंगरप्रिंट इनवैलिड आ जाती है, जान अलग में आ जाती है, कहीं निकाल तो नहीं दिया.
महीने के अंत में जब सैलरी क्रेडिट होती है तो इतनी गिल्टी फीलिंग आती है, जैसे आप टर्की का कैंटनमेंट बोल रहे हो, कैब्स को बीच-बीच में रुकावे, फालतू में पैसे लेने का। So in this sector now, obviously there is a pyramid, the lowest level, the middle level, and the highest level. So the pyramid starts with the freshers. Okay, these people are very genuine people. Gaul लोग हैं ये लोग. So they take up anything, they take up any challenge, they take up any work. C लिखेगा, हाँ लिखूंगा. C++ लिखेगा, लिखूंगा. Java लिखूंगा, हाँ लिखूंगा. मोटर व्हीकल इलेक्ट्रिक लिखेगा. So imagine this, it's like a newly established South Indian restaurant. आप इडली खा रहे हो, okay, and आपका सांबार खत्म हो गया है, okay, and you ask for a सांबार. So वो बंदा आपको सांबार भी देता है, ग्रीन चटनी भी देता है और रेड चटनी भी देता है, ठीक है. सिमिलरली आपको अगर उसको नाइट शिफ्ट में बुलाना है तो आप बोलोगे वीकेंड है, कट ओवर है, सैटरडे को आएगा, वो बोलेगा कौन सी शिफ्ट में आओ, नाइट शिफ्ट में आओ, मॉर्निंग शिफ्ट में आओ. अरे साला वीकेंड को आ रहा है, आप कितना भी शिवगामी देवी हो, आपकी आंखों से एक आंसू तो टपक ही नहीं. Now similarly, this person becomes mature, has 5 to 6 years of experience. इसने सारी दुनिया देख ली है और इसको पता है 28% मार्जिन कैसे बनता है, और इसका एटीट्यूड एक ही जैसा बन जाता है कि इतने पैसे में इतना मिलेगा. Same person opens a South Indian restaurant. It's famous for 1 year. आप सांबार मांगते हो, वो बोले 20 रुपए. बोले अरे ऐसा क्यों, आजकल रेट यही चल रहा है. इसको भी आप पूछोगे यार वीकेंड है, सैटरडे है, कट ओवर करेगा, 2 कॉम्प ऑफ लूंगा. एक ही दिन आना है, 2 कॉम्प ऑफ क्यों, आजकल रेट यही चल रहा है. सिमिलरली, और इन लोगों को ना एक बीमारी है, ये हर चीज डॉक्यूमेंट करके रखते हैं. आप उन्हें सवाल फेंको, डॉक्यूमेंट का पाथ मारेंगे, सवाल पूछो, डॉक्यूमेंट का पाथ मारेंगे. तो अगर उसी बंदे को आपने डॉक्यूमेंट का पूछ लिया कि भाई यूरोप का डेटा कहाँ रखा है, यू गो टू कॉमन मैनेजमेंट रिपोर्टिंग ओवरव्यू स्लाइड नंबर 16, दैट्स योर ऑब्जेक्ट. सिमिलरली आप इस बंदे को पूछोगे कि भाई रवा इडली मिलेगा, वो बोलेगा मेनू खोलो, सेकंड पेज पे जाओ, रवा इडली लिखा है, हाँ लिखा है, मिलेगा. Then there is third type which are very senior, okay, जिनका 90% ऑफ काम आउटलुक से हो जाता है और आधे टाइम ये लोग अप्रूव्ड ही लिखते रहते हैं. Can you please approve my leave? Approved. Can you please approve my budget? Approved. सड़क हटानी है, मेट्रो लगानी है, approved. और कभी-कभी तो इतने आलसी हो जाते हैं कि अप्रूव्ड को ऑटोमेट कर देते हैं, सिग्नेचर में ही डाल देते हैं. Approved. Best regards, श्री रामनाथ कोविंद. On your way home on Friday, आप सीधा जाते हो हिंजेवाड़ी से, और जो मिडिल लेवल का पर्सन होता है उसके पीछे एक मस्त बंदी बैठी होती है जो उसको कान में बोलती है, सुनो, हेल्थ कॉन्शियस हो जाता है. और आप फ्रूट की दुकान पे ठेले पे रुकते हो, जिसका न्योता आपको 1-1 किलोमीटर पहले दिया जाता है, और आप मैच द फॉलोइंग खेलते हो उसको. And the brand that you wear at this age is jockey. And अगर आप फ्रेशर हो, आप सीधा जा रहे हो, आप राइट में रुकोगे, प्रथम वाइन्स, बॉटल खरीदोगे, घर पे जाके टेंडर पे सीधा ऑटो राइट स्वाइप मारोगे, और आप भी जॉकी पहनते हो बट दूसरी साइड से. MBMS को साइड मैनेजमेंट भी बोलते हैं. और जो सीनियर हो कहीं नहीं जाता, ना लेफ्ट ना राइट, सीधा जाता है, डीमार्ट जाता है, जो सस्ता है वो खरीदता है, वही पहनता है. और इन सब का ना ऑनसेट प्रेफरेंस चॉइस भी सेम ही होता है, ठीक है. जैसे आप सीनियर बंदा है, 2 बच्चे हैं, इनको इंग्लिश स्कूलिंग में बच्चों की स्कूलिंग करवानी है, तो वो जाएंगे इंग्लैंड, यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया. और जो मिडिल लेवल का बंदा है, उसकी अभी शादी हुई है जानू वाली, वो सीधा जाता है और वो जाता है यूरोप, और उसको कंपनी के पैसे से हनीमून करना होता है. और जो तीसरा बंदा होता है वो है फ्रेशर. ये ऑनसाइट सुनते इनको कुछ समझ में नहीं आता, वो वहीं जाते हैं जहाँ पे फीमेल रेशियो मेल रेशियो से ज्यादा रहता है, और जहाँ पे स्ट्रिप क्लब
थोड़ा सा चीप है। कॉन्सर्ट सुनते ही एक ही फैंटेसी दिमाग में घूमती है कि एयरपोर्ट पे उस पार 60-70 लड़कियां खड़ी हैं, आपका वेट कर रही है, आ रहा है। In that way, it is no different than love jihad. जन्नत जाऊंगा, होरे मिलेंगी।